United States of America is looming under a big banking crisis right now. जहां पर the 16th largest bank of US, the Silicon Valley Bank, has been shut down. Now, what is the crisis all about? SVB क्यों collapse हुआ and what is its aftermath? Now, you have to remember that ये concept is very important for your current affairs as well. और economics का precisely, it is the biggest news since 2008. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में we'll be looking at हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे. Now, if you talk about the themes, I'll be telling you what is the crisis all about और ये crisis क्यों हुआ और क्यों कहा जा रहा है that it has a contagion effect जहां पर it can spread to the entire world. Then we'll see impact पूरी दुनिया में क्या होगा इसका and then whether India would be impacted or not. Now, if you talk about what is Silicon Valley Bank, ये बैंक क्या है, कब फाउंड हुआ था? It was founded in 1983 कैलिफोर्निया. Now see, सांता क्लारा में कैलिफोर्निया के अंदर this bank was established. वहां पर सिलिकॉन वैली बैंक is generally a bank जिसमें आम कोई आपका कस्टमर या डिपॉजिटर पैसे नहीं भरता. It is generally for technology startups. टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स. फॉर एग्जांपल, आपको पता है इंडिया में भी काफी स्टार्टअप का कल्चर चल रहा है अभी. एंड इफ दीज स्टार्टअप्स दे वांट सम बैंक टू गिव देम द लोन, आपको पता है कि कितना मुश्किल हो जाता है स्टार्टअप्स के लिए लोन देना. दैट इज व्हाई आरबीआई आल्सो केम अप विद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, जहां पर रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी में दे हैव आल्सो सेड कि आपके बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर पे स्टार्टअप्स को लोन देना चाहिए. नाउ इन द सेम वे यूएस के अंदर व्हेनेवर स्टार्टअप्स नीडेड टू टेक द लोन, दे यूज्ड टू गो टू दिस बैंक SVB. और कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में nearly 50% of the startups have taken actually these loans and have deposited the money into this SVB. Now you can see that SVB calls itself the financial partner of the innovation economy because आपको पता है startups में innovation होता है. Now यही आपका बैंक है which is considered as the financial partner of the innovation economy has now been shut down. So इसमें कहा जाता है 2008 के बाद से इतना बड़ा बैंक आज तक कोलैप्स नहीं हुआ है. इट वाज योर वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक जो लास्ट टाइम 2008 में कोलैप्स हुआ था, जिसकी वजह से आपका फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ अलोंग विद द लेहमैन क्राइसिस. बट आज जो क्राइसिस है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एसवीबी. नाउ विल सी कि क्राइसिस क्या है. नाउ सी फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू अ ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट. इट वाज इन 2020 व्हेन यू नो दैट कोविड हो रहा था एंड बिकॉज ऑफ द कोविड फेडरल रिजर्व जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व स्टार्टेड इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई बिकॉज आपको पता है व्हेन यू हैव दिस रिसेशन इन द इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यू नीड टू इंक्रीज द मनी सप्लाई. और मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए यू हैव टू ब्रिंग डाउन द रेट्स इन द इकोनॉमी. तो इंडिया में भी जब हमें मनी सप्लाई बढ़ाना होता है हम रेट कम करते हैं. नाउ दीज रेट्स इन द इकोनॉमी वी कॉल देम द इंटरेस्ट रेट्स. दीज रेट्स इन द इकोनॉमी व्हेन दे स्टार्टेड टू फॉल, for example, आपका 4% का रेट था, fell to 3%, then fell to 2%, then fell to 1%. And in this time after COVID, we also saw a time when the inflation rate, when the interest rate was nearly 0%. When the inflation interest rate was nearly 0%. यानी आपका Federal Reserve was giving loans at 0% interest rate. Now, nearly 0% का interest rate, we call it a zero interest rate policy. This was what was happening. इसकी वजह से आपके यूएस की इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा, जिसकी वजह से दी स्टार्टअप्स दे यूज्ड टू टेक दीज लोन्स फ्रॉम द एसवीबी और एसवीबी में लोन लेने के बाद दे इन्वेस्टेड दैट मनी और स्टार्टअप में बूम हो गया, पूरा फाइनेंशियल बूम हो गया. सो इट प्रोवोक्ड अ बूम इन वेंचर कैपिटल एक्टिविटी. तो स्टार्टअप बूम क्रिएट हो गया आपके यूएस के अंदर. व्हेन दीज स्टार्टअप्स अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, अब स्टार्टअप को कोई बैंक चाहिए जहां पर दे वुड डिपॉजिट दिस मनी बिकॉज दे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर द कोविड. Now this money, you know that startups का हर एक स्टार्टअप का मेजरली अकाउंट होता है सिलिकॉन वैली बैंक में. इंडिया में भी more than 200 startups have deposited some money into the Silicon Valley Bank. Now Silicon Valley Bank में these startups started to pour money. Now the money has been deposited with the Silicon Valley Bank. कहा जाता है इतना ज्यादा डिपॉजिट आने लगा आफ्टर द कोविड दैट सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट्स काफी ज्यादा थे और उनका एसेट उतना नहीं था. बिकॉज वी नो इन बैंकिंग व्हेनेवर यू टेक अ डिपॉजिट दैट इज अ लायबिलिटी फॉर द बैंक एंड व्हेनेवर यू गिव अ लोन दैट इज एन एसेट फॉर द बैंक. तो बैंक का एसेट तो उतना नहीं था बट लायबिलिटी काफी बढ़ रही थी. व्हाई? बिकॉज दीज पीपल दे हैव डिपॉजिटेड द मनी इनटू द बैंक. नाउ एसवीबी को अब एसेट भी मैनेज करना है. दे हैव टू इंक्रीज देयर एसेट्स एंड इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम टू गिव लोन बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स काफी ऑलरेडी कम थे.
So what they instead did is they poured this huge amount of money into the bond market. उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर दिया. Now they purchased these bonds. Let's assume उन्होंने बॉन्ड खरीदा $100 का, now या $100 का. They purchased this bond from the US का ट्रेजरी बॉन्ड था. They issued that bond. गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करती है, why? Because they have to take some money. So what they did is this SVB purchased this bond और bond पे उनको interest rate मिलने लगा. Now see, they're earning this interest rate and everything is working fine. Suddenly what happens कि Federal Reserve जो आपका है, it started to bringing down the money supply. Now Federal Reserve जब money supply बढ़ा रहा था, that is known as quantitative easing in US. But now when it is trying to reduce the money supply, it is known as quantitative tapering. QT बोलते हैं इसको. Now why would the Fed, why would the Central Bank of US bring down the money supply? It was majorly because of the inflation problem. Because आपने already काफी ज़्यादा money supply create किया था. Because of that, you had huge inflation in the US economy. 40 साल का record high inflation था. That is why to control that inflation, Fed tried to reduce the money supply. And to reduce the money supply, we know you have to increase the rate of interest. आपको rate of interest बढ़ाना पड़ेगा. Now we know in economics that जब economy में rate of interest बढ़ जाता है, it has an inverse relationship with the bond prices. It has an inverse relationship with the bond prices. Interest rate बढ़ेगा, bond price गिरेगा. What would that mean? That would mean Federal Reserve आपका जैसे ही उन्होंने interest rate बढ़ाना शुरू किया, when they started to increase the interest rate, what happened? Now see, there is an investor. एक investor है. This investor has to invest some money into the bond market. Now US का treasury bond जो पहले बॉन्ड था जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं थी, उस वक्त लेट्स अज्यूम ट्रेजरी बॉन्ड पे ही वुड गेट 2% इंटरेस्ट रेट. नाउ इंटरेस्ट रेट्स हैव इंक्रीज्ड. फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी. अब जो नया यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड होगा, इट विल हैव एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%. फाइन. नाउ यू आर एन इन्वेस्टर, यू हैव टू इन्वेस्ट मनी. यहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. वेयर वुड यू इन्वेस्ट द मनी? दिस इन्वेस्टर वुड लाइक टू इन्वेस्ट द मनी इन दीज न्यू ट्रेजरी बॉन्ड्स. Why? Because it has a high rate of interest. Why? Because rate of interest was increased. Now, क्योंकि नए bonds का rate of interest ज्यादा है, तो पुराने bonds की डिमांड कम होने लगी. पुराने bonds की डिमांड कम होने लगी. And it was these bonds that Silicon Valley Bank had purchased. Now, Silicon Valley Bank ने $100 का bond खरीदा था, and $100 की इन bonds की डिमांड मार्केट में गिरने लगी. Now, when the market में डिमांड इसकी गिर रही है, तो we can see that their prices will come down. तो अगर 100 का bond है, people are not ready to purchase this bond at 100. Why? Because if they purchase this bond, they'll get 7%. Why would they purchase this bond at only 2%? What they do is they will only purchase this bond if they are ready to give it at $80. Fine. तो bond prices गिरेगा. The moment interest rate increases from 2 to 7%, these bond prices will fall from 100 to 80. Now, this is what was actually the problem with the Silicon Valley Bank. Now, see, Silicon Valley Bank ने जब huge inflow of deposits देखे, they saw that their deposits were initially in 2019 $61 billion, and by 2022 December, their deposits ran to $173 billion. If you can see, आपका यहाँ पर आपका deposit था 61 पे, now they are at 173 December 2022. Now, काफी सारा deposit था. Because of these deposits, they actually took this money and invested a lot of money into the bond market. अब bond market में पैसा जाने लगा, Fed में interest rate बढ़ाने लगा. Now, the moment Fed increased the interest rates, you know कि bond prices economy में गिरने लगे. Now, see what happens. अब Silicon Valley Bank का जो asset है, these bonds, उसका value market में गिर रहा है. Now, what is happening now is, this is a very important scenario here. See, आपका bond का price is falling, and Silicon Valley Bank has a lot of money in these bonds, जिसका value अब दिन ब दिन कम हो रहा है. Fine. Now these investors, they had taken a lot of money and invested in Silicon Valley Bank, and Silicon Valley Bank had taken a lot of money and invested in bonds, जिसका price अब गिर रहा है. Now what is happening is, these investors, what they want to do is, they want to take their money back. Why? Because they want to invest in new bonds. Why? Because new bonds में अगर इन्वेस्ट करेंगे, they'll get a 7% interest rate. पर यहाँ पर बैंक उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा. So what will happen is, these people, they demanded their money back. And when the Silicon Valley Bank
had to give them the money. Where would the money come from? They have to sell these bonds at a lower price. So if they had purchased it at $100, they will now have to sell it at 80. Now these banks, the Silicon Valley Bank, started selling their bonds, started selling their assets at a loss, at a lower bond price. Because of that, it is said Silicon Valley Bank का $2 billion का loss हुआ, because they had to pay this money to the investor. The moment they started paying this money to the investor, दूसरा investor सामने आ गया. He also demanded the money. So they still had to, start selling the bonds at a lower price. Another investor demanded the money. Another investor demanded the money. Everybody came to the bank and started demanding the money. Why? Because they thought कि बैंक का नुकसान हो रहा है. They have a loss of $2 billion. So bank would not be able to sustain. So everybody started taking money out of the bank. Or this is a classic case of bank run. We call it bank run. जब एक साथ सारे लोग बैंक के पास जाते हैं to demand the money back. And this bank did not have the money. Therefore, जो सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया के रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, they shut it down. उन्होंने इसको बंद कर दिया. They shut it down. And this was the big problem of Silicon Valley Bank. Now see, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था इधर. When interest rate increase, bond price गिरेगा, and with the fall in the bond price, there is an outflow of deposits. कि बैंक से outflow हो रहा है deposits का. The bank lost nearly $2 billion, and it was a classic case of bank run. Now, Silicon Valley Bank तो गया. The bank is now over. It has been shut down. और बैंक के सारे deposits और assets have been given to a new bank. A new bank has been created by the name of New Bank of Santa Clara. और उसके पास ये deposit दिए गए हैं. They will now try to, figure out कि हमें क्या करना है depositors के साथ. Now, people who had deposited the money, कुछ लोगों ने तो वापस पैसा निकाल लिया. But there are a lot of companies, lot of startups that have given the money to this company, and their money is now in danger. Fine? Because US में the idea is, if your deposit is more than $250,000, your money is not insured. आपका जो वहां पर इंश्योरेंस का गारंटी जो देती है अथॉरिटी, कॉल्ड FDIC, वो सिर्फ आपको $250,000 तक इंश्योरेंस करके दे सकती है. But if your deposit is more than $250,000, then your money is not safe. And we have seen that बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारे स्टार्टअप्स ने बहुत सारा पैसा डाला था SVB में, more than $250,000, the money which was not insured. Because of that, these startups are now facing a crisis. बैंक तो अब गया ही, these startups are now facing the crisis. And with this crisis, बाकी के बैंक्स में भी अब पैनिक फैल रहा है, और ये पैनिक ही क्रिएट कर सकता है, और पैनिक की वजह से बैंक रन के चांसेस दूसरे बैंक्स में भी फैल रहे हैं. Now see, I'll give you an example of the impact it has had on the world. Now see, banks failure is raising concerns about other banks as well. आपने देखना है that share of this First Republic Bank, this was a bank in San Francisco. Also, we have a Signature Bank. This bank is a Signature Bank of New York. In banks, KB share has actually gone down by 20%. Why? Because of this panic, because of the same panic. Now see, what is the impact it would have on the world? To actually make you understand the impact of this Silicon Valley Bank collapse on the world, you have to understand the petition that was recently issued by Y Combinator. ये Y Combinator क्या है? It is an American technology startup accelerator that actually invests a lot of money in startups. And they, according to them, they have invested money in thousands of startups and even 200 startups in India, this Y Combinator. And these startups had actually a relationship, a deposit relationship with the Silicon Valley Bank. And Y Combinator has come up with a petition. This petition was signed by 1,200 CEOs and founders in US, और जिसमें they have signed this petition and send it to US Treasury Department, and they have told them that you need to interfere here. Because if you do not interfere, Silicon Valley Bank के साथ जितने भी startups ने इसमें deposit किया था, it is at least 36,000 startups. 5 small businesses. They have given their money to the Silicon Valley Bank. And if this bank has collapsed, and these 36,000 small businesses have invested more than $250,000 into the bank, तो बैंक उसको वापस कैसे देगा? Now, if you do not interfere here, then there will be a startup collapse. After the bank collapse, there will be a startup collapse. Now, this has a real risk of systemic contagion. ये फैल सकता है. Fine, it can go to Europe, it can come to India. Now, there is a real risk of systemic contagion. It can trigger bank run on every other small banks. Now, this is a problem. Fine, Y Combinator ने ये petition sign कराया है.
Now India के perspective में what are the experts saying? India में they are saying that India का जो banking system है, it is very much insulated, it is very much regulated by RBI. तो हमारा उतना ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता because हमारे बैंक्स में, हमारे बैंकिंग सिस्टम में RBI का बहुत तेज कंट्रोल है. And RBI, since it's controlling the entire banking system, Indian banking system, so will not find any such collapse in India. But there is a problem with the startup industry, और जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में चेंजेस आ सकती है. स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन बदल सकता है कंपनीज का. because of this panic, it might create a stock market collapse. पर बैंकिंग सेक्टर में we have this system because of the RBI's supervision and regulation. It is a very insulated and regulated system. पर there is a problem कि जहां पर we can have a stock market valuation issue. पर उसकी वजह से फिर बैंकिंग क्राइसिस भी बढ़ सकता है. तो we have to be very vigilant here. Already इंडिया की मिनिस्ट्री ने स्टार्टअप्स के साथ मीटिंग्स करना शुरू कर दिया है so that we really get an idea that how many startups were linked with the Silicon Valley Bank and other banks abroad. Now, we have seen that this entire crisis was because of the Fed, and it is said that by Milton Friedman, a very leading economist. He had said that the crisis of 1929, and the monetarist school says the crisis of 2009 and the crisis of this 2023 Silicon Valley Bank crisis is all the ball game of the Fed. ये Fed के रेट बढ़ाने की वजह से हो रहा है, and it can create a cascading effect in the entire world. Now, it is also said by India's CEO of Mahindra Bank, Kotak Mahindra Bank. उन्होंने कहा था कि जब आप 0% से 5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे एक साल में, which would be 500 basis points, an accident is bound to happen. So he said in a tweet that when interest rates move up by 500 basis points from zero in a year, an accident was waiting to happen somewhere. Now this is a brief idea about Silicon Valley Bank and the collapse and its aftermath. Thank you so much.